हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा. इट इज one of the most important topic of our NCERT book. Okay, so let us start our class. In this topic maxima and minima, actually we discuss about two conditions or two things. One of them, maximum or minimum value of given function, and second one is at which point given function have maximum value or minimum value. So we discuss about first condition, means what is the minimum or maximum value of given function if exists. Okay, so I am taking some examples or questions for explain that topic. Yes, I am taking some examples like our first example. If yes, beta, our first example like that, if given curve is y is equal to fx और fx कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा ग्राफ बना लिया. ओके, लाइक इट इज y इज इक्वल टू fx. तो हमारे को यहां फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू चेक करनी हो तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वी नो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो बेटा ग्राफ की हेल्प से तो हम लोग यहां शो कर सकते हैं कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन कर्व. लेकिन अगर हमारे को फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन लाइक दिस, तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उनको थोड़ा समझते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन maximum or minimum value graphically, and after that we will calculate the maximum and minimum value of given curve or function. Okay, like that given curve is y is equal to minus modulus x minus 1 plus 3. Here our given function is modulus function. Is that clear? तो यहां हमारे पास इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ होगा. तो यहां हमें पता चल रहा है एट दिस पॉइंट वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड वी कांट कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, यस बेटा. सिमिलरली इफ देयर इज गिवन कर्व y is equal to sin x, as we know the graph of sin x like this, and at pi by 2 we all know that maximum value plus 1, and at 3 pi by 2 minimum value of y is equal to sin x is minus 1. Is that clear? Similarly, if we take curve like y is equal to x square plus 2, as we know it is a parabolic curve, and graph of this curve like this, it is a parabola. Okay, so at which point minimum value of this, at this point this curve have their minimum value, but according to this curve we can't calculate the maximum value of this curve. Is that clear? Similarly, if we take curve y is equal to minus x minus 2 whole square plus 2,
it is also a parabolic curve, okay, like this. यहां पैराबोला ऐसा कुछ बन रहा था, यहां ऐसा कुछ बन गया। इस कंडीशन में हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे इस पॉइंट पे, एंड इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। यस बेटा, सिमिलरली फॉर दिस कर्व इट इज y is equal to cos x plus 3. According to this condition, we can draw the curve like this. So, at this point, we have the maximum value of the curve, okay, and it is the minimum value of this curve, okay. बेटा ये तो हमने ग्राफिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अदरवाइज एट विच पॉइंट गिवन कर्व हैव मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन कर्व। आई मीन टू से व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज गिवन कर्व्स। वी कैन कैलकुलेट maximum or minimum value of given function with the help of differentiation, but कुछ conditions में हम लोग without differentiation भी function की maximum और minimum value calculate कर सकते हैं। Like this one, it is a modulus function and we all know that modulus function cannot be differentiable. Okay, so we can't find derivative of this function, so we should calculate maximum or minimum value of this function without differentiation. तो देखना जरा, we have this function like y is equal to minus in modulus x minus 1 plus 3, but a modulus function and we all know that modulus functions are always positive but here negative, तो ये पूरी टोटल वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। अब देखो ये जो वैल्यू है इस मॉडुलस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस x is equal to 1 is x is equal Yes, x is equal to 1 is a critical point of this modulus function. So at x is equal to 1, this will be 0. At x is equal to 1, modulus x minus 1 will be 0. Except 1, जब हम लोग इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ओके, और नेगेटिव आएगी इट मींस +3 और ये नेगेटिव मींस इससे क्या होगी? कम होती रहेगी वैल्यू, डिक्रीज होती रहेगी। सो fx y is equal to 3 is मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब जो भी कुछ x की वैल्यू पुट करोगे आप तो उससे क्या होगा हमारे पास? 3 से लेसर वैल्यू ही आती रहेगी, 3 से ग्रेटर नहीं जाएगी। सो वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन is 3. Is that clear? Similarly, if we want to calculate the maximum or minimum value of this function, in this condition, in this case, our fourth question, y is equal to x square plus 2. ओके, अब यहाँ पे x की सी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर टर्म है, चाहे अब x की वैल्यू चाहे हम लोग नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो यहाँ हमारे पास क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे
वैल्यू क्या रहेगी एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू पुट करो और चाहे वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, हमेशा क्या होगी y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगी. सो वी कैन से मिनिमम value of given function is 2. Is that clear? With the help of these patterns we can calculate the maximum or minimum value of given function without differentiation. चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लाइक दिस. अब बेटा देखना जरा, इस केस में ये वैल्यू तो स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव है, बट आगे क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई. सो ये टोटल वैल्यू कैसे हो गई नेगेटिव हो गई. मतलब x की हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 से लेसर होती रहेगी. तो 10 से लेसर हो गई, इट मींस 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन. इज दैट क्लियर? तो बेटा ऐसे देखो जरा, y is equal to cos x plus 3, ऐसा कोई कंडीशन हो तो फिर क्या होगा, we all know that. अब देखो बेटा इस केस को सॉल्व करने का अलग पैटर्न है. ओके, लाइक दिस. we all know that cos x lie in between -1 to +1. ओके, यस, हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है cos x plus 3. तो हम लोग इन तीनों टर्म्स में +3 ऐड कर दें, लाइक -1 plus 3 cos x plus 3 1 plus 3. So it is 2 and it is our given function y सपोज कर लो, fx सपोज कर लो, and it is 4. We can say minimum value of this function is 2 and maximum value of this function is 4. तो हम लोग विदाउट डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन. इज दैट क्लियर? यस बेटा. अब देखो इसी केस में हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन और दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइक दिस. इफ we want to calculate the minimum or maximum value of sin x in modulus plus 3, according to this condition you can calculate the maximum or minimum value of this function. Like listen, we know that sin x lie in between -1 and 1, but it is a modulus function. So we all know that modulus functions are always positive. We should take like this: sin x in modulus is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Okay, but we want to calculate maximum or minimum value of this function. So can we add 3 or in all the terms? So 0 plus 3 in modulus sin x plus 3 and it is 1 plus 3. So it is 3, it is given function and it is 4. So we can say minimum value of this given function is 3 and maximum value of this given function is 4. Is that clear? लेकिन अब देखो, अब यही केस अगर हमारे पास मॉडुलस इस केस में आ जाता, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन. ओके, तब हम लोग क्या करना था, सेम पैटर्न यूज लेते लाइक दिस.
For this condition, we all know that sin x in between -1 to 1, and we want to find the value of sin x plus 3. So -1 plus 3, sin x plus 3, 1 plus 3, it is 2. sin x plus 3, it is 4. अब अगर हम लोग इसका मॉडुलस भी यूज ले लेंगे तो भी देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, सो 2, it is our function, and 4. So we can say the minimum value of this function is 2 and maximum value is 4. Is that clear? Yes, beta. So we can calculate or solve these type of questions. There is some questions in our NCERT book based on same topic, so you should calculate them, you should solve them. Okay then, thank you, best of luck.